हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सोशियो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में फ़िज़िकल एजुकेशन बीए फर्स्ट सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों ही ऐड किए गए हैं। जैसे कि आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस प्रिपेयर किए गए हैं। ये आपके फर्स्ट यूनिट में शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 का आपने आंसर देना है। 12 मार्क्स के ये होंगे। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस ऐसे टाइप, जो कि हर एक यूनिट में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक में से आपने कोई एक का आंसर देना है। ये इसके अलावा इस वीडियो को पंजाबी में भी बनाया गया है, वहाँ से आप पंजाबी मीडियम के स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस देख सकते हो। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहीं पे आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट डाल दी जाएगी, वहाँ से आपने पेपर की तैयारी कर सकते हो। और सोशियोलॉजी के पूरे सिलेबस के वीडियोस मिल जाएंगे, वहाँ लेक्चर्स दिए गए हैं, वो आप वहाँ से भी तैयारी अपने पूरे सिलेबस की कर सकते हो। बहुत इजी वर्डिंग में वो तैयार किए गए हैं। पंजाबी कंपलसरी के पूरे सिलेबस के वीडियो भी मिल जाएंगे, लेक्चर्स उसकी तैयारी भी आप यहीं से कर सकते हो। हाँ, सबसे पहले है यूनिट फर्स्ट, जिसमें है शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, एंड नेक्स्ट डिफाइन वर्ड एजुकेशन, एंड देन डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। हाँ जी स्टूडेंट्स, जो आप ये क्वेश्चंस करोगे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसमें क्वेश्चन मोल्ड करके डाले जा सकते हैं आपके पेपर में, लेकिन इसी में से तकरीबन पेपर आता है। शॉर्ट क्वेश्चंस ये बनाए गए हैं। इसके अलावा जब लॉन्ग क्वेश्चन करोगे तो उसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन निकल आएंगे। एंड नेक्स्ट है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, and then define education, and next define the term physical education, and then what do you understand by education, and next what is the aim of physical education, and then write 4 objectives of physical education, and then what is Olympic creed, and then when and where first Asian Games held, and next what is WADA, WADA. Next, write the name of 4 Arjun awardees, and then write about Dr. Tarachand Committee, and next when and where modern handball was started, and next write any 4 objectives of Asian Games, and then when Ministry of Youth Affairs and Sports was established, and next write about International Olympic Committee, and then how psychology is related with the sports, and next when and where were first Asian Games held, and next who is considered the father of modern Olympic Games, and next list any 2 objectives of Rajkumari Amrit Kaur coaching scheme, and next name the major tournaments of handball, and next is who was the first secretary of IOA, and then who was the father of modern Olympic Games, and next is what do you know about the rules of competition in the ancient Olympics, and next write down 2 objectives of Sports Authority of India, and then write about the decline of ancient Olympic Games, and next when it was decided first that physical education be made compulsory in India, and next is write about SAF Games, and next enlist famous handball players, and then write about the decline of ancient Olympic Games, and next how and when did the Netaji Subhash National Institute of Sports organized, and then when and where were the first Commonwealth Games held, and next write about Rajkumari Amrit Kaur coaching scheme, and next is what is the duration of the handball game for men and women, and then write about the Olympic flag, and next when and where the first modern Olympic Games were held, and next write down the 2 major tournaments and 2 Arjun awardees of handball game, and next is what do you know about Olympic motto, and then what were the rules of eligibility for sports competition during ancient Olympic Games, and then what do you understand by blue card, and then write about World Anti-Doping Agency, and next is what is sports psychology, and explain the following abbreviated words IOC, IOA, and then SAI and WHO.
ये यूनिट फर्स्ट जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। यूनिट सेकंड से लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे टाइप। ये क्वेश्चंस इस तरह से हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल एजुकेशन, एंड नेक्स्ट एंड एक्सप्लेन इट्स नीड एंड इम्पॉर्टेंस इन मॉडर्न एरा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन फिजिकल एजुकेशन, एक्सप्लेन इट्स नीड एंड इम्पॉर्टेंस। हाँ जी स्टूडेंट्स, इन दोनों का आंसर सेम है। इसको मोल्ड करके क्वेश्चन को डाला गया। इसी तरह से मोल्ड करके आपके पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसका आंसर कईयों का सेम ही है, तो उसको समझ के आपने करना है। डिस्कस द पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड राइट अबाउट द प्री इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, and then discuss the development of physical education in India before 1920, and then what are the aims and objectives of physical education in modern era, and next is define physical education and elaborate the objectives of physical education, and next physical education is an integral part of education, discuss, and then explain whether physical education is an art or science, and next is what do you mean by education, discuss the aims and objectives of education, and next is education is lifelong process, discuss। ये यूनिट सेकंड था। अब है यूनिट थर्ड के लॉन्ग क्वेश्चंस इस तरह से, एक्सप्लेन एशियन गेम्स विद इट्स ऑब्जेक्टिव्स, एंड देन राइट अबाउट द एशियन एंड एफ्रो एशियन गेम्स, एंड नेक्स्ट एक्सप्लेन अबाउट द एशियन गेम्स इन डिटेल, एंड देन एक्सप्लेन अबाउट द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, and next discuss differences between the ancient and modern Olympic games, and then throw a light on the differences and similarities in the ancient and modern Olympic games, and then briefly discuss the conduct of first Asian games including opening ceremony and closing ceremony, and then what do you know about the Asian games and Commonwealth games, and next describe Commonwealth games, and next is describe the main features of ancient Olympic games, and then describe the historical background of ancient Olympic games, also state the reason of their decline and termination, write short notes। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी ऐसे शॉर्ट नोट्स करके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके जितने पार्ट्स दिए जाएंगे उतने का उसने आपने आंसर देना है। 2 या 3 इसमें पूछे जा सकते हैं, ओलंपिक फ्लैग, ओलंपिक मोटो, ओलंपिक टॉर्च, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स। एंड फोर्थ यूनिट जिसमें है elaborate about Rajkumari coaching scheme and sports authority of India, what is Rajkumari Amrit Kaur coaching scheme, define in detail। इसमें भी सेम ही आंसर है इसका। एंड नेक्स्ट एक्सप्लेन अबाउट नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एंड इंडियन ओलंपियड एसोसिएशन, एंड देन व्हेन वाज NIS पटियाला एस्टैब्लिश, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव टू एस्टैब्लिश NIS पटियाला, एंड नेक्स्ट राइट अबाउट द कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। हाँ जी स्टूडेंट्स, आप सोशियोलॉजी और पंजाबी कंपलसरी के पूरे सिलेबस के लेक्चर्स यहीं पे देख सकते हो, और उसके लिए आपने प्लेलिस्ट खोलनी है और वहाँ से अपने पेपर की तैयारी करनी है। बहुत इजी वर्डिंग में वो क्वेश्चंस करवाए गए हैं। एंड नेक्स्ट है डिस्क्राइब अबाउट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, एंड देन ब्रीफली एक्सप्लेन द फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, and next what do you know about general body and governing body of sports authority of India SAI, and explain the objectives of sports authority of India, and next write a note in detail on International Olympic Committee, write a short note on IOA Indian Olympic Association and IOC International Olympic Committee, and then write a short note on the following Rajkumari Amrit Kaur coaching scheme NIS। अब है इसका लास्ट यूनिट फिफ्थ, एक्सप्लेन द हिस्ट्री एंड द बेसिक फंडामेंटल ऑफ हैंडबॉल गेम, एंड देन ले आउट ऑफ हैंडबॉल कोर्ट एंड राइट द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ हैंडबॉल गेम, एंड देन राइट द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ हैंडबॉल गेम एंड ड्रॉ द हैंडबॉल कोर्ट ऑल्सो, एंड देन एक्सप्लेन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ हैंडबॉल गेम, एंड देन राइट द रूल्स ऑफ हैंडबॉल एंड मेन टूर्नामेंट्स ऑफ हैंडबॉल। And next is draw a diagram of the ground of handball and write the name of equipment of handball, and then draw a diagram of the handball court and label its all measurement, and then write about the closing and opening ceremony of Olympic Games, and then can Olympic Games bring international cooperation and friendship, write in detail, and then draw a layout of a handball court with all specification and equipment,
And next is write about the following: basic fundamentals of handball, important tournament of handball, history of handball game, total number of players and officials in handball game, base fundamental skills of handball game. स्टूडेंट्स ये थे आपके लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस फिज़िकल एजुकेशन के। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं से आप देख सकते हो, वहाँ से तैयारी कर सकते हो। आपका पेपर कैसे हो रहे हैं ये ज़रूर बताना। जो पेपर अभी हो चुके हैं उनके कितने % इसमें से आया ये भी ज़रूर बताना। आपका पेपर कैसा होता है और कितने मार्क्स आते हैं ये सब कुछ आपने यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। May God's guidance be with you during the exam and may you be able to answer each questions correctly. Thank you so much. मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।